Hi friends, this is Literature by Munaza, and today my topic is what is poetry. We discussed in an earlier video that poetry is a genre of literature, as the other genres are like plays, dramas, or short stories, novels. Similarly, this is another genre which is called poetry. So, we also discussed that in the start, poetry introduced through the war songs, through the warriors, or besides them, the people, those who were singing for them, the patriotic songs. Similarly, we see in hymns, in prayers, people are singing, not only today, but earlier in the ancient time, they were singing rhymes or in their prayers they were singing like that. So we will discuss it according to the different poets and philosophers. What do they define about poetry? So let's start talk about them. uh, First of all, I let you know about Aristotle, the Greek philosopher, and he defines poetry as a mimetic or imitative use of language, rhythm, and harmony separately or in combination. So, according to Aristotle, Aristotle defines what is poetry. He says that दिस इज अ मिमिक होता है किसी चीज को कॉपी करना, कॉपिंग समथिंग, और रेप्लिका और इमिटेटिव या इमेजिनेशन मिलाना, इमिटेशन मिलाना, सोचना उस चीज के बारे में। एंड देन ऑफ द लैंग्वेज, रिदम, हार्मनी सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन, जो लैंग्वेज के अंदर एक रिदमिक कॉम्बिनेशन आती है, पोइट्री जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पीस एंड हार्मनी में, दैट इज कॉल्ड पोइट्री, right? So, according to William Wordsworth, and he's a famous British poet or poet from England. So, he describes poetry. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling and emotions recollected in tranquility. जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस, पोइट्री जो है वो एक ना सिर्फ पोइट के बल्कि इंसान के एक पावरफुल इमोशंस जो ओवरफ्लो करते हैं उसके अंदर, वो जब उसको बयान करता है, चाहे वो लिखता है या वो उसे बोलता है, तो दिस इज कॉल्ड पोइट्री, राइट? एंड the example of this is, we can say, like if we are filling water in a pot or glass, and when it is filling, so we are pouring constantly, तो पानी जो है वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो पोइट्स के या जो लिखने वाले के एहसास हैं, उसके जो जज्बात हैं, वो जब बहुत ज़्यादा भर जाते हैं उसके दिल में, दिमाग में, तो वो ओवरफ्लो करते हैं, एंड देन they are coming out in the beautiful verses and rhymes. And then another definition from William Wordsworth is, poetry is the breadth and finer spirit of all knowledge. So, according to Wordsworth's second definition, poetry is the breath, सांस की तरह है, इतनी इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, इसी तरह हमारे जो इमोशंस और जज्बात होते हैं, उनको हम जब बाहर निकालते हैं राइमिंग फॉर्म में, तो दिस इज पोइट्री। सिमिलरली ही इज सेइंग ब्रेथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। एंड then another poet, P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, he is saying, or he says, poetry is general sense may be defined as the expression of imagination. According to him, according to Shelley, this is an expression of imagination. Imagination होती है जो भी इंसान का तखय्युल होता है, जो उसकी सोच होती है। और पोएट की सोच या इंसान की सोच कहीं भी जा सकती है, आसमान तक जा सकती है, ज़मीन के नीचे जा सकती है, जैसे कि हम पोइट्री के अंदर पढ़ते हैं।
जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, तो जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिखते हैं तो एडम एंड ईव से लेकर सैटर्न एंड देन दे कम डाउन टू ऑन द अर्थ, तो ये सारी चीजें जो हैं, और सैटर्न के बारे में लिखना और एनीथिंग एल्स whatever the poets are thinking, ये जो उनकी इमेजिनेशन होती है या किसी भी इंसान का तखय्युल जो होता है, this is imagination. So according to Shelley, poetry is the general sense may be defined as the expression of, वो जो एक्सप्रेशन इमेजिनेशन की वजह से बाहर आता है किसी इंसान का तखय्युल जो है वो उसके अल्फाज में बयान होता है, दिस इज पोइट्री अकॉर्डिंग टू पीबी शेले. I have written a few more definitions from multiple poets, and this is Robert Frost. Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. So, according to Frost, पोइट्री जो है वो जो पोइट के इमोशंस हैं वो जब थॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं और थॉट जो हैं वो वर्ड्स में चेंज होती हैं, एंड व्हेन ही इज स्पीकिंग द वर्ड्स और राइटिंग द वर्ड्स, सो दिस इज पोइट्री. And then about Matthew Arnold. Matthew Arnold was a Victorian poet. Poetry is a criticism of life. Critique is the view, and poetry is the lava of imagination. This is not the criticism, the negative criticism. This is the criticism which we are studying in literature, and this is about to analysis something. किसी चीज को analysis करना, analyze करना और जांचना, तो it's about that. So he's saying that critique is the view and poetry is like the lava. जैसे कि लावा होता है जो कि बर्स्ट करता है जो वॉल्केनिक इरप्शन से, तो थॉट्स और इमेजिनेशन जो कि पोएट के माइंड में आए हुए होते हैं, दे कम आउट लाइक लावा. इतनी ज़्यादा शिद्दत से उसके जज्बात जो हैं वो बाहर आते हैं और वो एक पोइट्री की फॉर्म में उसको लिखता या बयान करता है. Then, according to Wikipedia, rhythmic qualities, poetry has rhythmic qualities, aesthetic sense, such as sound, rhyme, symbols. So, whatever is the piece of writing, if it has rhythmic quality, koi rhyme, जैसे कि we discussed a lot about that rhymes, songs, and rhyming schemes. So, if any piece of art has these qualities, it is giving us a static sense, हमें बहुत ही अच्छा और pleasant feeling दे रहा है पढ़ने से. It has sounds, it has rhymes, it has symbols. So this is poetry. And in the last, I will give my definition, which I conclude from all these definitions, and this is passions, idea, imagination, series of emotion of a poet. So this is poetry. पैशंस और आइडिया एंड इमोशन, इमेजिनेशन जो एक पोएट के माइंड में होता है, और सीरीज ऑफ इमोशंस, उसके जितने जज्बात होते हैं पोएट के, दिस इज कॉल्ड पोएट्री. सो आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो, and if you have any questions regarding this topic, you can ask in the comments. And if you did not subscribe so far my channel, please subscribe it and like my video. Thank you.